Families of three women from Telangana trafficked to the Gulf countries being lured with well-paying jobs have urged Union External Affairs Minister S. Shankar to help the women return home to India. Hello and welcome to the Times of India. This is Sushil Rao in Hyderabad bringing you this report. Ghulam Mustafa of Risalagadda, Ramnagar, Mushirabad said his wife Meherunisa was in search of a job due to the poor financial condition of the family post-lockdown. She was offered a job in Saudi Arabia to work in a beauty parlor and was offered a salary of 35,000 rupees per month. She was taken to Saudi Arabia on March 30th through Hyderabad, Kochi, Dubai and then Dammam. There she was received and taken to Najran. She was asked to work in a beauty parlor under a woman. However, after a month she was sent to Riyadh and handed over to a manpower consultancy company located somewhere near Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh, Ghulam Mustafa said. He said after she reached Riyadh, she was not being given proper food and accommodation and she fell ill. When she expressed her desire to return home, the kafil, that is the sponsor, demanded that she pay 2 lakh rupees and it is only then would she be allowed to go home to India. हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मैं मशराबाद में रहती हूँ जी। मेरे को यहाँ इंडिया से एजेंट लेके आया। ये तनख्वाह अच्छी है, ये 30-40 हज़ार तनख्वाह आती। ब्यूटी पार्लर के काम से लेके आया। मेरे को 1 महीना काम करा के दूसरे महीने में मेरे को मैडम सिस्टर का बोल के भेजी। सिस्टर का घर नहीं होता, या ऑफिस में भिजा दी। फिर शेख से बात करी मैं साइली से, तो शेख बोला नहीं, इनके ख़त्मा का काम बोल के भेजे और इनके वीज़े पे ख़त्मा का है। प्लीज़ अमजदुल्ला ख़ान भाई, आपसे बहुत गुजारिश है मेरे को वापस बुला लो इंडिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे को बहुत फिरा रहे इधर से उधर, उधर से इधर, ये काम करा रहे वो काम करा रहे, खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ यहाँ से। प्लीज़ आपसे गुजारिश है, ला लो आप मेरे को बुला के। एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, एजेंट बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं मदद कर रहे मेरी। प्लीज़ भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को ठहरना नहीं आ रहा, चक्कर आ रही, मेरे को खाना पानी नहीं है पेट में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होते जा रही दिन पे दिन। मैं आके 8 दिन हो गया, मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ना वो मैडम कर रही फ़ोन, ना एजेंट कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। रहने का मेरे को वापस बुला रहा। अमजदुल्ला खान प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़। MBT leader and social worker Amjadullah Khan also brought to the notice of the authorities the plight of the women. He also brought to the notice of the Ministry of External Affairs about the plight of 2 other women who had similarly been trafficked to the Gulf countries. Zareen Begum, in a letter to the Union External Affairs Minister, said her sister Rizwan Begum, a resident of Mujahid Nagar, Nizamabad, Telangana, was in search of a job after her husband had divorced her. She was approached by a local travel agent whose name she mentioned as Mateen from Nizamabad. She was promised a salary of 25,000 rupees per month as a housemaid. She travelled to Muscat, Oman through Hyderabad, Kochi, Dubai, Muscat on February 13th. She was received by one Samaya and taken to an office, and after 8 days was asked to work in a house as a housemaid. After working for 2.5 months, she was handed over back to her agent. She was then sent to another house and again returned. Zareen Begum said this way her sister was shifted to many houses and was not given salary and also was not provided proper food and accommodation. The manpower consultancy has now reportedly demanded 2.5 lakh rupees to allow her to return to India. अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ। मैं 8 दिन हो गया पर आके कोयत में। ये लोग मेरे को बोले थे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आए जब से 1 सेकंड मेरे को खामोश बैठने नहीं दे रहे। इतना काम ले रहे, इतना काम ले रहे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है, कमर में बहुत दर्द हो रहा। 8 दिन हो गया मैं यहाँ पर आके। मेरे बच्चों के लिए आई थी मैं यहाँ घर में। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, कल दवाखाने को लेके गए थे, लेके जाके बोले कि रेस्ट करो, फिर भी उठा के काम कर रहा है। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे आप लोगों की मेहरबानी होती, मेरे को बुला लिया तो मेरे को बुला लीजिए प्लीज़, मेरे को बुला
बुला लो, मैं बहुत तकलीफ में, मैं उन लोग के चोरी से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरे को बुला लो मेरे बच्चों के पास। मैं आंदा कभी बाहर जाने का नाम भी नहीं लेती हूँ, को बुला लो प्लीज़। आप लोगों की ज़िंदगी भर मैं एहसान मानती हूँ, मेरे को बुला लो। मेरे को सुबह 6 बजे से छोड़ देते, रात के 3 बजे तक बस काम काम काम। इससे ज़्यादा मैं अकेली हूँ यहाँ पर, इतना काम है कि मैं नहीं कर पा रही यहाँ पर। बुला लो प्लीज़। In another case, Ifat Begum said after her father's death, her mother Hasina Begum, a resident of Falaknuma in Hyderabad and hailing from Nizamabad district, was looking for a job when she was approached by one Mustafa who said she could work as a housemaid for a relative. Alia was offered 27,000 rupees per month. As per the agreement, my mother went to Kuwait on May 29th and was asked to work as a housemaid. After she reached there, she fell ill and was admitted to a hospital, and doctors advised her bed rest due to slip disc. She is unable to do any work due to her back problem. She wants to return to India, but her employer is not allowing her to return. They have also snatched her phone and are not allowing her to be in touch with us. Kindly ask the Indian Embassy in Kuwait to rescue her and repatriate her as soon as possible, Ifat Begum said in a letter to Union External Affairs Minister S. Jaishankar. Thanks for tuning in. Keep watching the Times of India. This is Sushil Rao in Hyderabad.